Continuing its journey from Kutch, Network 18's initiative in association with Novartis, Netra Suraksha, India Against Diabetes, launched its Netra Suraksha camps in the national capital in a grand ceremony in partnership with Delhi Police. Continuing on its mission to build awareness about diabetes and related eye diseases, the prestigious event was graced by the chief guest, Mr Rakesh Asthana, ex-commissioner of Delhi Police, who was received and welcomed by the Delhi Police Guard of Honor and special band performance. The event was also graced by eminent guests such as Dr. Ramasamy Vice President VRSI, Vaishali Iyer, Country Head Communications, Patient Engagement and CSR at Novartis India, Rani Rampal, women's hockey player, who spoke extensively about the need to counter the rising problem of diabetes and diabetic retinopathy in India as a part of a panel discussion moderated by Network 18's Anand Narasimhan. Ladies and gentlemen, welcome to the second edition, Netra Suraksha. So we're talking about an issue that is diabetic retinopathy. What is diabetic retinopathy? और इसका हमारी आँखों से और diabetes से क्या connection है? We'll try and explore that and also explain to you why. And we're very, very happy. And I have to say that to keep the nation's vision safe from diabetes, that's the reason why this initiative at Network 18, that is Netra Suraksha. Besides being India's capital, Delhi is also the center of a wide range of social, cultural and economic activities, and the Delhi police plays several roles to maintain law and order in the city. And there's some lot of hard action that we've seen from all of you, so I have to salute you for that also. As news guys, I really appreciate what you guys are doing to keep us safe and to keep our streets safe. Meanwhile, with their watchful eyes under all situations, Delhi police responsibly ensure safety at all times. Now, however, the health and well-being of the nation's citizens face another threat known as diabetes. Now, with that comes along more health complications if they are ignored, such as diabetic retinopathy, which impacts the vision of diabetes patients and can lead to blindness. With over 77 million diabetes patients in India, 75% of them suffer from some form of diabetic retinopathy. Now, to save India's vision from alarming effects of diabetes, Network 18 started an initiative to raise awareness towards this issue, Netra Suraksha, in association with Novartis, who would like to thank especially for partnering with us and also joining issue with us to save the vision of our brave hearts and their families from diabetes. Now, today we are at the headquarters of the Delhi Police to inaugurate Netra Suraksha's partnership with the Delhi Police and thank the Delhi Police for supporting the cause and coming together to save India's vision. I'd also, with your kind permission, sir, like to invite some distinguished guests who are with us to find answers and also to share experiences. I'd like to begin with Dr. Ramasamy. He is the Vice President of VRSI, the Vitro Retina Society of India, and he will be giving us the answers. I have, may I also request Vaishali Iyer, Country Head Communications, Patient Engagement and CSR at Novartis India. And last but not the least, a very familiar face, and she's come because it's the Delhi Police. Rani Rampal, member of the hockey team. Aye. So, sir, let me first ask you, thank you very much for doing this and for partnering with us. What did you think when we came to you and said, sir, diabetic retinopathy, pe, we want to do a camp for the Delhi Police? Actually, I know a little bit about it. So I felt that it will be a very good initiative, not only for the citizens of the country, but also for the police force, because most of our officers and Jawans, they work 24/7, and they don't have the regular eating habits. They can't eat at the time fixed for lunch, breakfast or dinner. So in the process, the diabetes has become very common amongst forces all over the country. So when you came to me with this suggestion or the request, I lapped it up and we immediately decided that we should be the right people to begin with this campaign. So let's understand, what is diabetic retinopathy? Diabetic retinopathy occurs as a complication, like you hear about diabetic, how kidneys get affected. The only problem with diabetes is over a period of time, it affects all the small blood vessels in our body.
And eye is one structure, and we have the kidneys, we have the nerves, all this get affected over a period of time. So eye is the only place, as I say, a window to the body is the eye. You can see the blood vessels in its real form. So when we examine the eye, the back of the eye, we can see the nature of the blood vessels. And because of diabetes, the blood vessels actually over a period of time gets worn out. And they start leaking. They become abnormal. And this causes problems to the retina, and then the whole condition of diabetic retinopathy starts happening. So that's the main problem, how vision is affected. So we need to, but it doesn't happen overnight. It happens over a period of time. You're saying, so should I get myself screened for my eyes if I realize I have sugar or diabetes? Or if I get myself screened periodically, I can actually find out whether or not I have diabetes? Exactly. Is that possible? Yes, sir. You definitely can prevent. If you get yourself screened, when you know you have diabetes, it's very important that you go. Even your vision may be absolutely normal, but you may have changes in the back of the eye. And that can be identified only on screening. If somebody looks at the back of the eye, they'll be able to find out that there is diabetic retinopathy. And when you find it early on, further deterioration can be prevented absolutely. You can preserve your vision. No, because कई बार ऐसा होता है ना कि आपको डॉक्टर कहते हैं कि देखिए आपका शुगर लेवल्स बॉर्डर लाइन है ना, दे से बॉर्डर लाइन, सो उसको आप कंट्रोल कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे. सो इन दैट केस शुड आई गेट माई सेल्फ टेस्टेड और नॉट? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? I believe that we should have a regular medical checkup. In forces, we have 40 plus people have to undergo this checkups mandatorily. But otherwise also, I personally feel that everyone should have this awareness to have one full checkup, full body checkup once in a year. One full body checkup once in a year. Yes. But these path labs, doctors are, all these places where you go and get our check, वो तो सिर्फ खून निकाल लेते हैं and then do a urine test. They don't get ourselves screened. They don't do. So, should I be a patient with diabetes? I don't have diabetes. So let me ask you, why should I get myself screened? आप में से कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं, भाई मुझे तो शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों स्क्रीन कराऊं? So what will be your answer to people like that? Yeah, see, it has got, diabetes is one problem, but if you're getting your eyes checked up, there are so many, as I said, eye is a window to the body. There are a lot of things that gets reflected or shown in the eye. But mainly for diabetes, it has to be examined. The other problems are today, I don't know if you do, there are so many people who don't get their eye examined with a simple refractive error. Yeah. People don't get their eyes examined. Only when they realize that a simple glasses can improve their vision, they see the whole new world. Correct. They see that I agree. But sometimes ऐसा होता है ना, कभी-कभार थोड़ा धुंधला, आपको कभी हुआ है रानी जी कि आप खेल रहे हैं, सडनली थोड़ा धुंधला लग रहा है, फिर ऐसा लगा चलो चेहरा धो लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा? हाँ होता है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, देन यू आर लाइक कि ठीक है अब थोड़ा देर कहीं बैठना है, वो बिल्कुल ब्लाइंड आपको कुछ. सबसे पहले तो आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आप मुझे बताइए आप क्यों आई? आपका अल्टीरियर मोटिव क्या था यार? ये जो पुलिस का इवेंट था, दिल्ली पुलिस का इवेंट था तो मुझे अच्छा लगता है बिकॉज पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा एवरी सिंगल डे लोगों की हर फील्ड में इतनी हेल्प करते हैं. सो मुझे लगा कि अगर मैं भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो आई वुड लाइक टू थैंक सीपी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इनिशिएटिव. एंड अच्छा लगा यहाँ पे आके कि इवन मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, डायबिटीज़ से कि आँखों पे इफ़ेक्ट होता है या आँखों के मतलब वजह से हमें ये भी पता चल सकता है कि अगर हम आई टेस्ट कराएं कि हमें डायबिटीज़ है. लकीली कभी फैमिली में किसी को ऐसा हुआ नहीं. इवन 20-22 साल के करियर में किसी मतलब एटलीस्ट हॉकी में मैंने कभी किसी प्लेयर को देखा नहीं किसी को डायबिटीज़ हो. तो इसके बारे में सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं थे कि ऐसा होता है. बट यहाँ आके मुझे भी, मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है रहा कि मुझे पता चला आज कि हमारी आई साइट पे कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर हमें डायबिटीज़ है. तो या But just like Rani Rampal did not know that diabetic retinopathy is something that can set on if you are a patient with diabetes,
Or if you screen yourself and if you have diabetic retinopathy, if you're found, that means you are a patient of diabetes. These are possibilities. There are lakhs of people who don't know, जिनको पता नहीं है. And that's the reason why this initiative of Netra Suraksha. So let me ask the lady who's decided to partner with us as part representing the company which is our associate, that is Novartis, why? Good question, and thank you for that. I think first I would like to compliment the entire Network 18 team for this very meaningful initiative. You know, something to do with the eyes, something to do with diabetes, which is a national problem. It's the biggest healthcare challenge in the country, if I may say so. Also want to thank all the dignitaries over here who are there in solidarity to really support this cause. So thank you very much. For Novartis, you know, I would actually put it in three parts, you know, why we want to partner with this initiative. The first part, if you really go to see, if I go back to the history of Novartis, we are almost a 250-year-old organization present in the country since 1947. Our purpose is really to extend and improve patient lives. Now, that really doesn't mean that, you know, we just make medicines and it gets over with that. The entire value chain is very critical, right from diagnosis to screening to awareness. And this actually leads us to live our purpose. So that's point number one. Point number two is, if you really go back to the healthcare challenge of the country, which is diabetes, one of the biggest one. If you look at what the government is working towards, preventable blindness, I think these two pieces are very important for us to take up, more so because we are leaders in diabetes management as well as eye care. Right. So it has a beautiful synergy. And third piece, and this is the real truth, that we recognize the fact that we can't do it alone. Yeah. And we need partners, whether it is in the space of screening, diagnosis, or very, very reputed organizations who would help us drive the cause. And just to tell you, Anand, that, you know, we've been working on this since, I think, last couple of months. And the kind of response that we've got, whether it is from the army, whether the Delhi police, and thank you so much, sir, for this, the BSF or the CRPF, has been superb. And needless to say, VRSI and RSCDI who've like really come up and partnered. So if you really look at it, it's very holistic. It's not about Network 18 or Novartis, but it is everybody who's associated with the cause has stepped up, including the government of Gujarat, the other state governments who are wanting to partner and take this mantle forward. Because they realize it's a real issue. I just quickly wanted to ask, if I have DR, that is diabetic retinopathy, can I cure it? Is it curable? It is curable depending on which stage you are being identified. So जितना जल्दी पकड़ लो उतना The possibility earlier to cure it. you find out, cure is definitely possible. But the later you go, you can only arrest it, you can't reverse it. You can't reverse it. So the whole idea of screening is to do it early. That's the key thing. Before you lose your vision, you should ensure you're screening. Cementing his support for the Netra Suraksha India Against Diabetes initiative, ex-Commissioner Delhi Police Mr Rakesh Asthana delivered a special address at the event, congratulating Network 18 and Novartis for their remarkable initiative. The Honorable ex-Commissioner of Delhi Police also inaugurated the first of 30 eye checkup camps that will take place across the national capital and urged his fellow officers and soldiers to volunteer for a quick checkup as well. नेटवर्क 18 की तरफ से आयोजित इस ओकेजन पर मंच पे बैठे हुए मैं तमाम महानुभावों का दिल्ली पुलिस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस देश का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स है। हम करीब 94,000 स्ट्रेंथ के हैं और दुनिया में मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्सेस में दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ा पुलिस बल है। हमारी फोर्स जो है उसको अगर नौकरी के दरमियान समय नहीं मिले,
समय पर खाने के लिए या फिर समय पर एक्सरसाइजेस करने के लिए, तो उसका असर शरीर पे होता है। लेकिन उम्र के साथ और दिनचर्या जो इर्रेगुलर होती है उसकी वजह से शरीर के हर एक अंग के ऊपर असर पड़ने लगता है। एज सीनियर ऑफिसर हम लोग अपनी फोर्स से हमेशा बातचीत करते रहते हैं और हमारा एक सबसे बड़ा ध्येय होता है कि हम फोर्स के वेलफेयर के लिए काम करें। और वेलफेयर में एक बहुत बड़ा हिस्सा है हेल्थ का। मेनली जो हमारे जवान या अधिकारी होते हैं वो ट्रांसफ़र या पोस्टिंग्स इसलिए चाहते हैं कि वो शरीर से थक चुके हैं। मोस्टली मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने लोगों से मिलता हूँ उसमें 90% लोग या तो हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं या फिर डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो शरीर को धीरे 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 खाती रहती हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि नेटवर्क 18 ने ये बीड़ा उठाया है कि हमारे जवानों के बीच में, उनके फैमिलीज़ के बीच में एक इस अवेयरनेस कैंपेन करें कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी आंखों में असर हो सकता है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को अभी सब कुछ ठीक दिख रहा है तो मेरे को ये रेटिनोपैथी डायबिटीज़ की वजह से नहीं हो सकती। तो आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी nice and wonderful job. This area is a very neglected area. Mostly TV networks जो होते हैं वो entertainment या news या views के लिए होते हैं, but this awareness campaign from a leading news channel is something worth appreciating. और मैं दिल्ली पुलिस के तरफ से उनका हेड होने के नाते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी आप बिल्कुल हेल एंड हार्टी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि स्क्रीन करा लेना चाहिए ना? चेक कराने में क्या नहीं, जाता है? बिल्कुल आई थिंक हम सबके लिए हेल्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो हम सब देख सकते हैं डेली रूटीन में कि हम अच्छे से काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी भी प्रॉब्लम है, तो हम खुद से इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, एंड जो हमारा नेचर है वो भी बहुत, उसमें भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हम बहुत जल्दी नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम खुद की हेल्थ से परेशान हैं। बट हमें जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है वो कराना चाहिए, एंड स्पेशली हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है बॉडी का, लेकिन आइज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आइज़ की, उससे हम एक लाइफ को कलरफुल वे से देखते हैं कि लाइफ कितनी सुंदर है। अगर आई हमारी नहीं है, आइज़ हमारी सही नहीं है, तो लाइफ तो बहुत ब्लैक एंड वाइट लगती है। अगर आइज़ ही नहीं सही होंगी, कुछ देख नहीं सकते तो। आइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हॉकी लेके ओपोनेंट का डंडा करती हैं, आप लोग डंडा लेके ओपोनेंट का दौड़ाते हैं, तो अब वहाँ पे वो 2-4 इंच का फ़र्क है ना। अगर आई साइड क्लियर नहीं हुआ तो फिर गोल पोस्ट और गोल और नो गोल से वो 2 इंच का ही फ़र्क है। उधर थोड़ा धुंधला दिख गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर हॉकी की बात करो तो आइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हॉकी में, तो बिकॉज एवरी सिंगल सेकंड आपको आपका दिमाग तो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, लेकिन आइज़ भी आपको उधर से बॉल आ रही है, लेकिन आपको ये भी देखना आपका राइट में कौन सा ओपोनेंट है, लेफ्ट में कौन सा, आपके पीछे कौन है। तो आपका आइज़ जो है वो कंटिन्यूसली काम करता है ब्रेन के साथ ना, क्योंकि हमारा हॉकी में सबसे मेन जो बोलते हैं ना, एक प्री स्कैनिंग जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर जब हमारे पास बॉल है तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा प्लेयर आगे कौन है, पीछे कौन है, साइड में कौन है। तो वो दिमाग के साथ तो चलो हमें काम करना है, लेकिन आइज़ सही होंगी तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली ना। और बिना बॉल के भी हमें आइज़ तो चाहिए देखने के लिए कि हमारा ओपोनेंट कहाँ पे है, कि हम जिससे अपने गोल को प्रोटेक्ट कर सकें। सो आई थिंक किसी के लिए भी आइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हमने कुछ प्लेयर्स भी देखे हैं जो पैराथलीट्स होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, एंड वो किसी का हेल्प लेके जब वो रनिंग करते हैं, देन वी सी कि हमें देख के लगता है कि इनके लिए तो लाइफ कितना ही ज़्यादा, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, ब्लैक एंड वाइट है, कि इनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है ना, कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा है। वो सिर्फ सुन सकते हैं और उस सुनने से वो फील कर सकते हैं। बट वी आर लकी कि हम सबकी हमारे पास आइस हैं, तो इसका जिम्मेदारी हमारा खुद का ही है उसको टेक केयर करना। एंड आजकल तो वैसे बहुत फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि हम रेगुलर चेकअप्स के लिए जा सकते हैं, ताकि इनिशियल स्टेज में हमें पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट भी ईजिली हो सकता है।
जब वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन में चली जाती है देन डिफिकल्ट है। बिल्कुल। अब पता है बहुत लोग यहाँ सोच रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि चारों तरफ नज़र होती है तो आप अच्छी हॉकी खेल सकते हो, तो दिल्ली पुलिस वाले सब जो है, ये मैं भी हॉकी खेल सकता हूँ, ये मैं भी हॉकी खेल सकती हूँ। हमारी भी तो नज़रें सब तरफ होती हैं। अब राकेश अस्थाना जी को देखिए, लेफ्ट राइट पीछे क्या कर रहा है, सब इधर नज़र रखे हुए हैं। अब सीपी साहब मेरे बगल में रख के इनको सब पता है, तो आप सोच लीजिए आप लोग क्या कर रहे होंगे। एक डायलॉग है कि हमारे आदमी चारों तरफ। The event ended with Mr Rakesh Asthana felicitating the guests with mementos, followed by the national anthem being played by the Delhi Police Band, celebrating the spirit of our forces and our great nation.